अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग ऑरेंज चिकन बना के दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी है। नवाब्स किचन के स्टाइल में कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। आज हम लोग ऑरेंज चिकन बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और डिफरेंट रेसिपी है। टेस्ट भी उतनी मज़ेदार है। इमीडिएटली हम लोग ये प्रोसेस शुरू करने के लिए अच्छी तरह वॉश करा हुआ चिकन लेंगे। इसी को हम लोग मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के प्रोसेस में पहले हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट के साथ साथ हम लोग इसमें वाइट पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे। वाइट पेपर के साथ साथ हम लोग इसमें ऑल पर्पस फ्लोर मैदा भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कॉर्नफ्लोर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग इसमें एग्स भी ऐड करेंगे। चिकन पे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह अप्लाई करे बाद हम लोग 30 मिनट्स तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे।
चिकन फ्राई होते ही ऑलमोस्ट प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है। फाइनल प्रोसेस में हम लोग बाउल गर्म हो गया है, इसी में ऑयल ऐड करेंगे। इसी ऑयल में हम लोग फाइनली चॉप्ड जिंजर और गार्लिक ऐड करेंगे। इसी में हम लोग थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करेंगे। विनेगर के साथ साथ इसमें हम लोग रेड चिल्ली सॉस भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करते ही हम लोग इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट ऑरेंज जूस। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ और इसको मज़ेदार करने के लिए हम लोग कैप्सिकम भी ऐड करेंगे। इसी वक्त जो पहले ही हम लोग फ्राई करके रखे थे उसी चिकन को ऐड करेंगे। रेसिपी तो बहुत ही मज़ेदार बना है और देखने के लिए बहुत ही यम्मी लग रहा है। इमीडिएटली हम लोग इसको पैक करेंगे और राइस के साथ साथ ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।